guys, welcome back to my YouTube channel. As you read it from the title, it's gonna be my birthday vlog and get ready with me. So I have turned 24 today. थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा अभी एज? I mean ऐसा लग रहा है यार बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हूँ मैं. Adulting is hitting. Also, if you don't know who I am, hi, my name is Tanishka and I would really appreciate if you could go and subscribe to my YouTube channel below. So I've ordered this chili toast and some coffee. Then we ordered some South Indian, of course, and this one my dad ate. Hello, we have just landed at Chennai. Say hi. So basically there's a lot of garmi, so everyone is very tired and dehydrated as well. It's going to take approximately 1 hour to reach the hotel and I will check in. We have reached the hotel and it is so beautiful. I mean, look at my mom. She is, I don't know if you could see her, but she is basically looking for a flower to put on her head and we have just reached. Oh, thank you. So they gave us a wet towel right now and my birthday is tomorrow, which is 20 May, and obviously I had to celebrate it in the south. And cheers. So this is the room, this is the washroom, bathroom. This is what I'm wearing. Please do not judge my outfit. This is the room, TV, and oh my god, the view is to just die for. Just look how pretty the beach is. Oh guys, ये देखो rocking chair. Then I don't think we'll require extra bed, right? अरे क्या जब से पैदा हुए एक ही साइज की तो क्यों रिक्वायर another bed? Now we're having lunch. The only reason we take buffets. So we just had a swim time and now we're gonna go to the beach and see if we can fly some kites or play some volleyball apparently because there are activities there. Guys, so I am done with my shower after the pool and then we ordered some snacks. I don't know if you can see some pakoras and some sandwich and fries and so yeah. Hi guys, good morning. It's my birthday today and obviously because we are at South, we will have a full authentic South Indian breakfast. I mean, what else would I want on my birthday because I love South Indian food. We are at the Shore Temple now. This is such a pretty place at Mahabalipuram. It is surrounded by the beach as well. So in the morning I went to the temple. Right now it's around 12 PM. So I'm going to quickly dress up, change into my birthday outfit, do some makeup because there's going to be cake cutting and I'm very excited for it. So a lot has happened with my birthday dress this year. Somehow जो मैंने order किया वो नहीं आया time पे and the one that I ordered is not fitting me because online shopping, you know. So that's very sad. इसके लिए I shopped a few dresses from Zara, so I think वो ही उसमें से कोई एक पहनना पड़ेगा मुझे आज. I'm just gonna do some trial and error and see which one looks the best and then come back. Yes, this is what I'm wearing. Finally ये वाला dress मैं पहन रही हूँ. It's a black dress from Zara and इसमें बहुत problem थी, but thanks to my mom she fixed it for me. यहाँ से तो लूज हो रही थी, मतलब नीचे आ रहा था. Back इसका काफी low है, but thanks to my mom. मम्मी के बिना क्या ही करती. So for skincare we're gonna start off with Hustle. It's my OG serum. Helped my skin a lot with its acne, with its pigmentation, a lot of things. So I'm gonna take it's a very precious product. I don't like wasting it. Let's wait for 5 minutes so that it gets completely absorbed. Now to lock Hustle in, I'm going to go with the In My Defense Moisturizer again by Dew. Of course, some mishap needs to happen.
My skin feels so good after dew. I cannot explain. Like, oh wow. Somehow I don't know what was happening. I was breaking out a little bit because of Unkissed. So I have switched to my previous sunscreen, which is Rene 50 SPF Glow Screen. This does not make me break out whatsoever, no matter how much I put. I don't do the 3 finger or whatever with this because I'm going to avoid my eyes in case I have to go to the pool later. For makeup, I'm going to keep it very basic, जो मैं हमेशा करती हूँ मेरे face पे. So for starters, I'm not using any foundation. I'm going to go for the L'Oreal Paris Infallible. This is in the shade 314 beige. So इसमें कैसे होता है ना, इसका इतना high coverage है कि इसमें all the marks just गायब हो जाते हैं. इसलिए मेरे को पसंद है. What I love about this concealer is that the fat sale get blended like, oh wow. And obviously you have to be careful about your skin prep, not bothering this chotu sa pimple. So what I do is I let the under eyes set a bit, like I don't just move it as soon as I let the under eye concealer dry a bit before I blend it. Trust the process for the under eyes and put it all over my eyes because that's just how I do it. Very likely I just don't do anything much to my eye. I don't put any pressure, as you can see. मेरे को बहुत डर लगता है कि भाई कुछ हो जाएगा. Look at that, look at the difference, guys. Look, the coverage of this concealer is insane. मतलब तुम्हारी नींद नहीं हुई है, तुम सोए नहीं हो बराबर से, but this concealer, इतना easy makeup. Wow. Next I'm gonna go for the K Beauty loose powder. This is in the shade Latte. नीचे गिरता नहीं है वरना. आपके ऊपर लगाओ अच्छे से, नीचे लगाओ. I don't know why I just use the same brush. काफी पहले से ऐसा ही है. This is the secret to why my base is perfect. हर जगह से nose पे और जिधर भी creasing होती है वहाँ पे लगाना. Because I have oily skin type, so I need to like put it all over. Oh yeah, no, this will not crease. I don't know why, but I'm comfortable putting black eyeshadow on the brows and like just brushing it later. कोई भी normal सा spoolie लेके इसको brush कर सकते हो. So now the brows are done. I'm gonna go for the blush. I don't know मेरी ऐसे order क्यों है makeup करने की, but जो है वो है. For the blush, I'm gonna go for the Kiro Glow On Blush Duo in the shade 02 Perfect Pink Grapefruit. It's like a duo blush with 2 different colors. And so the thing about me is if I like a product, I will keep the box of it. So yeah, I've been obsessed with it since the day this has come, and I haven't used any other blush जब से मेरे को ये मिला है. So this came as a PR to me and तब से ना I'm just stuck. तो इसको ना मैं सिर्फ W शेप में लगाती हूँ. बहुत मस्त लगता है मेरे को. Because मेरी oily skin है, so I prefer ऐसे powder products और cream products क्योंकि वो रहता ज़्यादा अच्छे से मेरी शक्ल पे. बहुत प्रिटी है ये वाला यार. इसको मतलब ऐसे मिक्स कर रही हूँ. Like I take more of the darker shade and not the colder one, and a little bit of colder वो मिक्स हो जाता है. See, पूरा फेस का ना मस्त लुक चेंज हो जाता है. हल्का सा चिन पे डाल दो, हल्का सा ऊपर डाल दो, ऐसा लगे कि ओ कॉन्टूर किया है हमने. कॉन्टूर जबकि ब्लश लगाया है सिर्फ. बचा कुछ आईज पे भी डाल देती हूँ मैं हल्का हल्का, और ताकि एकदम सीमलेस लगे. आई टेक द सेम कंसीलर लूज पाउडर वाला ब्लश जिसके ऊपर हल्का हल्का वो लगा हुआ होता है, पता है बचाओ कंसीलर. फिर उसको ऐसे लगा दो तो ऐसा लगेगा अरे वाह क्या फ्लॉलेस बेस है, कितना मस्त लग रहा है. पूरा हर जगह से ब्लेंडेड लगेगा फिर. Now for the eyes bit, I'm gonna go for Nykaa Glow Goals Shimmer Brick. As I said, अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो मैं उसका बॉक्स रखती हूँ ताकि वो थोड़ा है ना अच्छे से रखूँ मैं उसको. ये देखो क्या ही मस्त शेड है, क्या ही पिगमेंट है इस चीज़ का.
नॉर्मल ऐसे हैंड्स पे ले लो, लगा लो। फैमिली ये देखो, लाइक हो गया यार, सॉर्ट है जीवन। ऊपर वाला शेड ले रही हूँ मैं क्योंकि थोड़ा मेरे ड्रेस पे मैच कर रहा है। आई ऑल्सो यूज दिस एज अ हाईलाइटर जो उसका एक्चुअल काम है लाइफ में। हल्का सा लगा लो या हाथ से बस, क्योंकि हाथ से कैन लुक बेटर। और उसका पिगमेंट भी ना हैंड्स फिंगर्स से उसका पिगमेंट बेटर आता है। यहाँ पे लगा पूरे आँख पे लगा लेती हूँ, जहाँ पे भी चाहिए लगा लो, बस थोड़ी सी नाक पे लगा लो। ये देखने के बाद किसी को लगेगा वाह क्या ही मेकअप आर्टिस्ट्री करी है तुमने। फिर द मस्कारा I'm gonna go for the Huda Beauty Legit Lashes। इसमें 2 साइड होता है, मैं इतना देखती नहीं हूँ, जो पहले खुल जाता है वो ले लेती हूँ। दिस इज अ ग्रेट मस्कारा बाय द वे, मतलब तुम जाग जाओगे लेजिट। कैन यू सी, अगर तुम सो रहे हो ना, अभी देखो कितने बार कर रहे हो, 1 2 3 4 अच्छे बार, पर you'll get the point। नीचे भी लगा लिया हल्का सा मैंने, क्या ही मस्त लग रहा है यार, वाओ। देखो कैन यू सी, ओह शिट गाइस देयर इज अ टीनी टाइनी प्रॉब्लम, मैं ये लगाना भूल गई हूँ। ये है मेबेलिन का कॉलोसल गोल्ड लाइनर और हमने पहले मस्कारा लगा लिया है, बट मेकअप आर्टिस्ट होने का यही फ़ायदा है। लो हो गया जी लाइनर। सो कोई बात नहीं, लाइक इवन इफ यू डू फॉरगेट, दिस लाइनर इज ग्रेट फॉर people who like doing wings। कितना ही मस्त लग रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने लाइनर पहले लगाया था उसका। सो सिंस आई एम वेयरिंग ब्लैक, लिपस्टिक में 2 ही ऑप्शन है, इधर न्यूड चले जाओ या तो रेड चले जाओ। इट्स माई बर्थडे तो मैं रेड ही चूज़ करूँगी। तो रेड में मेरे पास 2 ऑप्शन है, वन इज मैक का चिली, ऐसा लगता है ये, एंड अदर वन इज शुगर का मिड, सॉरी दैट इज फेसेस का मिडनाइट, इसका है 01 स्कारलेट ओहारा, तो मेरे को लगता है यही चलेगा। इसका शार्प पहले से पिंक लगी हुई थी, उसके ऊपर ये लगा लिया। देखो कितना मस्त लग रहा है, थोड़ा और लगाना है। क्या करूँ, थोड़ी चिली, ये चिली पे मिक्स कर देते हैं इसमें। ताकि थोड़ा प्लांट लगे। मैं क्या करती हूँ ना, मैं ऐसे कर देती हूँ तो वो थोड़ा ऊपर लग जाता है, तो इससे ऐसा लगता है कि हमने लिप लाइनर भी लगाया है जो कि नहीं लगाया है, एंड इससे प्लम टप लगता है अच्छे से। So that is pretty much it. Ooh, fixing spray. So for those who don't know, I am also a certified makeup artist and I'm going to use this fixing spray by MAC. ये इतना छोटा सा है, इट्स ग्रेट फॉर ट्रैवल। उड़ा रही हूँ मैं, फनी फेसेस बनाऊंगी, इससे सब कुछ लॉक हो जाएगा। How does it look? Let me know in the comments. I'm thinking what to wear for the jewelry. ये मेरे पास ऐसे ब्रेसलेट है, ये देखो कितना प्यारा है। So I'm wearing this. ये देखो for the earrings I'm wearing this. इसका सब जा रहा है। For the heels I'm gonna wear these from Zara again, and I'll see you in the cake cutting. I'm also going to put on some press-on nails, and about that I'm going to post a reel very soon on my Instagram. So if you haven't followed me on Instagram, go ahead and do so. I will link it in the description box, so you can go and check out a good press-on nails ka brand. Okay, it's called Nak Parvati. So obviously I'll link it down below if you want. Happy birthday to you. Happy birthday dear friend. ये मम्मी ना लास्ट मिनट पे तू चेंज Easy only.
Yes, yes, yes. Good morning, guys. So after the breakfast, we are headed to the Prashanti sari shop. I don't know why, but my mom wants to shop some authentic saris from T Nagar here, and it is so hot right now, and it has taken us approximately 1 hour to reach this place, and अभी 5 मिनट बचा है, and obviously I'm going to take you there. And अभी मैं रेडी वेडी कुछ हुई नहीं हूँ, ऐसे ही नॉर्मल से कपड़े में आ गई हूँ. And say hi. ऑलमोस्ट सब डेड हो गए गर्मी में, एंड होपफुली द सारी शॉपिंग विल बी डन विद इन 3 आवर्स, एंड देन 4 आवर में हम लोग वापस होटल में पहुंचेंगे. उसके बाद आई एम गोना शूट अ गेट रेडी विद मी एंड देन गो फॉर लंच. सो मेरी मॉम इज़ अलग हैप्पी. बेसिकली मॉम ने इसका एड एंड ऑल सब देखा है फेसबुक पे. सो फ्रॉम फेसबुक शी इज़ लाइक अ फैन ऑफ दिस पर्टिकुलर साड़ी शॉप. पता नहीं क्या है, बट लेट्स सी. आई एम गोना गो इनसाइड नाउ. ये है बहुत कलर्स जो टर्न्स आउट अभी सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं. लिटिल फिट चेक. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना वेयर हील्स, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करना हील्स तो बिल्कुल ही नहीं जमेगा. तो मैंने मेरे नॉर्मल से शूज़ पहने हुए हैं, एंड थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया, तो भी बिकॉज ऑफ द हीट माई स्किन है हल्का हल्का रेड. बट ये आउटफिट बड़ा ही अच्छा है. आई एम फीलिंग लाइक अ ग्रीन कैप्सिकम राइट नाउ. मम्मी को ये वाली पसंद है, ये पता नहीं क्या. मम्मी आई थी साड़ी लेने, लेडी कुर्ता है अभी. ऑल मैन इन अ साड़ी शॉप. Hello my loves. So we are back at the hotel after the whole sari shopping was done. After the lunch I shot a quick get ready with me reel, so I post this on the YouTube shorts. So no worries if you're not there on Instagram. Vacation for a content creator is never really a vacation. You know why? Because we just have to shoot each and every outfit that we wear, and it's just too much for a human. Now we are at the wellness circle, wherein my mom is taking her spa treatment, and we are just waiting outside. That's my dad here. This is from the brand Swimwear India. I have collaborated with them. This is a very affordable brand मेरे हिसाब से, and काफ़ी अच्छा क्वालिटी का swimwear है ये. So I've quickly changed into this top because I was thinking that I might do a quick updated skincare routine video. I mean the whole nighttime skincare routine video. It's our last night over here, so it's kind of sad. I mean, honestly, but ठीक है. It was a very chill staycation for my birthday. This is especially for everyone who has wished me. Thank you so much guys. Genuinely thank you. It means a lot. सब लोग के wishes, जिन्होंने भी stories डाली, DM करा, cute messages भेजे, genuinely means a lot. And this is going to be the end of the vlog. Thank you so much guys for watching this vlog. I hope you like it, and let me know in the comments if you liked the get ready with me makeup tutorial. I specifically posted that क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे मेरे को बोला है कि थोड़ा detailed करो, थोड़ा long videos करो. Obviously Instagram पे you cannot put longer videos. Share it with someone who would love to watch this vlog and the get ready with me. And don't forget to subscribe to my YouTube channel right now if you haven't already. I hope that we can quickly cross 1,000 subscribers. And I'll definitely see you in my next one. Stay tuned for that. And I love you guys so much.